Hello everyone, welcome to IHN Academy. Myself Jayanti, your faculty for UGC NET Paper 1 and I welcome you all to my new session. आप सबका फिर से हमारे IHN Academy में और इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. Yes, so I hope you all are doing well and your preparation is going up very good. So I have brought some PYQs again in this session, as from previous few sessions we are discussing the PYQs, right? Because we know the weightage of PYQs in our UGC NET exam. So today we will be doing mathematical reasoning PYQs 2022. That means 10 very important questions of mathematical reasoning जो कि हमारे recent 2022 के question paper में पूछा गया था. Okay? So 2022 जो recent exam हुआ उसमें mathematical reasoning के जो questions आए, बहुत सारे शिफ्ट में अलग अलग question आए. तो उनमें से 10 questions जो important है, जिनका concept आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा important है, उन 10 questions को मैंने select किया है. And we will be solving all the 10 questions today. So let's just start without any delay. Okay. Let me show you the first bit. In the series 358, 364, 370, what will be the 12th term? Okay. So I hope you all have understood. The question is from AP. Arithmetic progression जो topic है हमारा, उससे ये question पूछा गया है. Right? Yes, ma'am. So 358, 364, 370 ये एक सीरीज है जो आगे और नंबर्स आएंगे. आपको इस सीरीज का 12th नंबर 12th टर्म फाइंड आउट करना है. So we know the formula of AP, right? AP means a series which is having equal distance. जब नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, सेम हो, that is AP, arithmetic progression, right? So T1 means first term जो हमारी है वो है 358. Then we need to calculate the D. D means common difference. जो numbers की बीच की जो same difference होती है, that is common difference, which make the series an AP, right? So you can see the series 358, then 364, then 370. So the difference between the numbers is 6, right? 358 plus 6, 364, 364 plus 6, 370. So the common difference is 6, right? So T12 means 12th term. So the formula for every term, T1 plus n minus 1 into D. This formula will work for all the terms. Like you need to calculate the 12th term, 13th term, 14th term. Whichever term you are calculating, the formula will be same. Understood? If in your exam you are getting any question from AP और आपको कोई term निकालना है किसी भी series का, so you will be putting on this formula. Right? So T1 means first term, then N means number of term. कौन से number का term आप निकाल रहे? Like 12th term, so N will be 12 minus 1, then multiplied by D. D की value 6. Then we will be solving it and the answer will be 424, option number B. Understood? Yes. Let's come to the next page. Consider the following fractions. The question is from fractions. 11 upon 17, 5 upon 6, 2 upon 3, 4 upon 11 and 6 upon 11. So there are 5 fractions given in the question and you need to choose the correct answer from the options given below. Options में जो है fractions को ascending order में arrange किया गया है. Right? You can see the options. Fractions सारे जो हैं A, B, C, D, E को ascending order में सारे options में दिया हो गया है and you need to choose the correct one. So to arrange it in the ascending order आपको ये पता होना चाहिए कौन सी fraction छोटी है, कौन सी fraction बड़ी है, which one is the smallest, which one is the greatest. So how do we calculate that? To calculate that, we will be converting the fractions into decimal numbers. Okay, 11 upon 17. So 11 divided by 17. Then we will be getting 0.647. So by converting the fractions into decimals will be the easiest way and easiest approach to find out which fraction is small and which fraction is greater. Understood? Yes. So we will be converting all the fractions into decimal numbers and then in decimal numbers you can easily find which one is small. Like 0.364 जो है वो हमारी सबसे छोटी नंबर है, right? Then 0.545, then 0.647. So we will be arranging the decimal numbers first. Then वो decimal number कौन से fraction से आए हैं? 0.364 कौन से फ्रैक्शन से मिला है आपको? 4 upon 11. तो उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म हम उसके नीचे लिख देंगे
4/11, then 6/11, then 11/17. So in this way, you can understand which fraction is smaller and which one is greater. Clear? So after solving all these, we can understand and find out the answer, option number E. I hope it's clear. Let's come to the next question. What is the rate of simple interest in a bank if the principal amount of 5 lakh becomes 10 lakh in 8 years? Okay, so the question is from simple interest. Simple interest से question है आपका. P, principal amount है 5 lakh. A means annual amount. Interest की बाद का जो amount होता है वो है 10 lakh. Time is given 8 years and you need to calculate rate of interest. Rate, simple interest का rate आपको निकालना है. So we all know the formula. Simple interest की formula क्या है? PRT/100. Okay, so P is 5 lakh, A is 10 lakh. So interest क्या हो जाएगा? Interest is the difference between annual and principal amount, right? Yes. So simple interest equal to A minus P. That means 10 lakh minus 5 lakh, which will be 5 lakh again. So simple interest की जो formula होती है PRT/100. We will be putting all the values except R, क्योंकि R की वैल्यू हमें निकालनी है. तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो R की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 12.5. अंडरस्टूड? यस मैम. तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूजीसी नेट. तो इससे आपको टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो भी पता चलेगी कि कौन से टॉपिक ज्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं. राइट? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number which is nearest to 3105 and exactly divisible by 21. Okay, so the question is from divisibility. Divisibility से भी बहुत सारे questions आते हैं. किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई question आपको divisibility से मिल ही जाता है. Divisibility means you need to check the number is divisible by this number or not. Which one is divisible, fully divisible, which one is not divisible. So here the question 3105 एक number है जो 21 से divisible नहीं, right? But you need to find out the number which is nearest to 3105 and is fully or exactly divisible by 21. Understood the question? Yes. So how will we solving that? On dividing 3105 by 21, we will get 18 as remainder. जब हम 21 से 3105 जो नंबर दिया गया है उसको डिवाइड करते हैं, 18 आपका रिमाइंडर बच जाता है. तो 18 21 से कितना कम है? 3. 18 plus 3 equal to 21. यानी 3 अगर और होता तो वो पूरी 21 से डिविजिबल हो जाता, because 21 is divisible by 21, obvious, right? Yes. So 3105 plus 3 equals to 3108 will be our answer, which will be exactly divisible by 21. Understood? Yes. Let's come to the next question. Okay, so the question is from matching the columns. Okay, so let me tell you that in your paper 1 and paper 2 as well, you will be getting so many questions from matching. Matching से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दो कॉलम दिए होंगे, उसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, और दोनों का आपको मैच करना. मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. ओके, सो सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स. टाइप ऑफ एंगल्स आर गिवन हियर एंड यू नीड टू मैच दैट. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? द एंगल्स whose sum is 180 डिग्री. जब दो एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. इधर जो हमारे लिस्ट 2 में है, द एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, यानी 2 नंबर जो है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए? द एंगल्स whose sum is 90 डिग्री. जब दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? एक्यूट एंगल्स, एक्यूट मीन्स न्यूनतम कोण हिंदी में जिसे हम कहते हैं, छोटे एंगल्स. एंगल्स विच आर less than 90 degree, यानी 1 number. Obtuse angle, angles greater than 90 but less than 180, यानी 90 और 180 के बीच के जो एंगल होते हैं वो obtuse angle होते हैं. So in this way we will be matching and our answer will be option number C, 2 4 1 3. Okay, so in the explanation I have given some type of angles so that you can understand it more clearly. Acute angle less than 90 degree, right angle is exactly equal to 90 degree, that is right angle. Obtuse means greater than 90, less than 180. Complementary, sum is 90 degree, supplementary sum is 180. Okay, so I have given the explanations for just all my dear learners so that they can understand it more clearly and they can revise the topic also, right? Yes. Let's come to the next question. Find the next number in the series given below. Number series से question है.
नंबर सीरीज हमने क्लास में डिटेल्ड मैनर में किया है, एंड वी हैव डन सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, वी हैव डन द प्रॉपर अप्रोच, सम टिप्स, ट्रिक्स, so this question should be easy for you, right? Yes, let's just read out the question. 7, then 10, then 15, 22, 33, 46. Next number you need to find out. So first you need to check this, जो ये नंबर सीरीज है वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है। तो वो कैसे पहचानते हैं? यस, मैंने आपको ट्रिक बताया है। यू नीड टू चेक द डिफरेंस फर्स्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज हाई, जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच का अगर बहुत ज्यादा है तो वो या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन सीरीज होगा। बट इफ द डिफरेंस इज लेस, डिफरेंस अगर कम है तो वो या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट यू नीड टू चेक द डिफरेंस। 7, 10, 15, 3, 5, 7 ऐसा डिफरेंस। डिफरेंस छोटे छोटे नंबर का है, डिफरेंस इज लिटिल, देयरफॉर इट विल बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो दोनों में से क्या है? द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है मींस इट विल बी एन एडिशन सीरीज। तो आपको ये तो पता चल गया कि एडिशन सीरीज है, यानी कुछ ना कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं पिछले नंबर में। नाउ 7 + 3 10, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो वी आर एडिंग 3 then 5 then 7, so 3 5 7, just think in your mind that 3 5 7 all are the prime numbers, right? Yes, so 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारी कौन सी है? 11। तो 11 22 में जोड़ेंगे तो 33। yes, that means we are going in a correct way. so in this way you need to find out, पहले सीरीज चेक करो कौन सी सीरीज है, देन डिफरेंस के नंबर देखो कि प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं या क्या ऐड हो रहे हैं। तो इसमें आपके सारे प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 7 + 3 then 5 then 7 11 13, लास्ट में 17 ऐड करोगे तो आपके आंसर आ जाएगी 63, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। द डेली इनकम ऑफ 3 पर्सन A, B and C इज इन द रेशियो ऑफ 2 5 11। जो रेशियो है इनकम की वो है 2:5:11, A, B और C। आपको निकालना है C का इनकम। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, द इनकम ऑफ B इज 291 मोर देन दैट ऑफ A। ओके, तो जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन मिले, फर्स्ट यू नीड टू सपोज 2x 5x 11। ओके, लेट द इनकम ऑफ A, B and C be 2x 5x 11। जो रेशियो दी हुई है 2:5:11, उसमें आपको x लगा देना, 2x 5x and 11। देन जो इनकम है B की 5x, वो A के इनकम से 291 ज्यादा है, तो 5x = A की इनकम 2x + 291 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन वी विल बी सॉल्विंग द इक्वेशन एंड x की वैल्यू आ जाएगी 97। बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, समटाइम्स द लर्नर जस्ट गिव द आंसर क्विकली एंड दे माइट गेट इट रॉन्ग। read the question very carefully and attentively. Okay, the question is asking you the income of C. C की इनकम पूछी गई है आपको, तो C की इनकम क्या है? 11x, 11 multiplied by x की वैल्यू, that is 97. So answer will be 1067. Clear? Yes. Let's come to the next question. What is the average of first 6 multiples of 11? Okay, question from average. Very important, interesting and easy topic for all my learners. Right? Yes. So average कैसे निकालते हैं? Sum of all values upon number of values. तो first 6 multiples क्या होंगे 11 के? Multiple means उसका टेबल we can say 11, 11 to the 22, 33, 44, 55, 60. ये हो गए 6 first multiples of 11. तो एवरेज निकालनी है, सब नंबर्स को जोड़ देंगे, कितने नंबर है? 6 अपॉन में 6, तो आंसर विल बी 38.5. Easy question? Yes. These all are the previous year questions. Okay, so you don't need to always think that we will be getting only difficult questions. You will be getting easy questions also. You just need to use your presence of mind, be very attentive, having a good approach, and then you will be cracking your net there very soon. Yeah? Let's come to the next one. If 7461 is coded as 135, then what will be the code for 6893? 7461 का कोड है 135, 6893 का कोड क्या होगा? तो कोडिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पहचानना होता है कि कोड कैसे डिसाइड हुआ है, हाउ यू कैन
code 7461 as 135. So the code is used here adding. Adding means first two digits 74 plus next two digits 61. जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 135 आपको मिलेगा. Okay, let me show you the explanation. 7461 में 74 और 61 को जब हम ऐड करेंगे तो 135 हमें मिलेगा. तो 68 और 93 को ऐड कर देंगे तो हमें 6893 का कोड मिल जाएगा, which will be 151. Option number B. Clear? Yes. So by adding all the digits, by adding two digits, you can check whatever should be the code. ऐसा भी हो सकता है कि चारों digits अलग अलग ऐड किए जाते हैं कभी कभी, जैसे 74 + 4 + 6 + 1. ऐसा भी कोड हो सकता है. Okay, so you need to check which is the code used there. Okay, so there is the last question of our today's session. In an examination, 42% students failed in mathematics, 52% failed in science, 17% students failed in both the subjects. Find the percentage of those who passed in both the subjects. तो 42% जो स्टूडेंट है वो मैथ्स में फेल हो गए, 52% साइंस में फेल हो गए और 17% बच्चे दोनों में फेल हुए हैं. तो आपको वो परसेंटेज निकालना है जो दोनों में पास हुए हैं. तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन साइंस. टोटल साइंस में कितने बच्चे फेल हुए हैं? 52. और 17% बच्चे दोनों में फेल हुए, दोनों में, मैथ्स में भी साइंस में. तो ओनली साइंस का हम कैसे निकालेंगे? 52 - 70, यानी साइंस में जितने भी बच्चे हुए हैं माइनस दोनों सब्जेक्ट्स में जितने बच्चे हुए हैं. 52 - 17, 35% स्टूडेंट्स आर फेल्ड ओनली इन साइंस. मैथ्स का भी वैसे निकालेंगे. टोटल जो बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं 42%, और दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं 17%, तो माइनस कर देंगे. तो ओनली मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो हमारा आ जाएगा 25%. ओके, तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु फेल्ड, 35% ओनली साइंस में फेल है, 25% ओनली मैथ्स में फेल है और 17% दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है. तो टोटल हमारे 77% बच्चे फेल हैं. बट यू नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स. Okay, be very attentive and careful when reading the question. I'm telling you again and again because sometimes we do something wrong in a hurry. Okay, so be very attentive and careful. तो पर 77% बच्चे अगर फेल हुए तो पास कितने होंगे? टोटल परसेंटेज हमारी 100 होती है, तो 100 - 77 यानी 23% बच्चे जो बचे हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 23%. Clear? Yes. So, my dear learners, we have completed all the 10 questions of today's session, and I hope each and every question was really helpful for you and you understood it. Every point was crystal clear in your mind. I'm hoping for that. And thank you so much for attending the class. Just wait for the upcoming sessions. We will be doing many PYQs and important questions from different units. Till then, enjoy your learning and keep working hard. Thank you so much for attending the class. See you.